Now, in the last class, I had already told you that what is globalization, and because of this process, इस process की वजह से the world has now become a small global village. And what are the causes, that why it took place, and what are its consequences, मतलब इसका जो असर है, what it is, and why we read it in political science, because now we are living in a global village. Globally we are handling everything. तो पॉलिटिक्स भी हमारा जो है दैट इज़ ऑल्सो नाउ नॉट कन्फाइंड टू अ नेशन. तो जब हम लोग किसी भी एक पॉलिसी को बनाते हैं, कंट्री के अंदर कोई भी पॉलिसी बनती है, हमने फॉरेन पॉलिसी वाले में पढ़ा था दैट द foreign policy, external policies of a country depends on internal as well as external factor. तो उसके अंदर ये वाले फैक्टर्स को भी हमें देखना पड़ता है, बिकॉज राइट नाउ इफ गवर्नमेंट इज मेकिंग एनी चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, इट हैज़ टू लुक फॉर द कंपनीज विच हैव इन्वेस्टेड इन आवर कंट्री. If a country is molding its visa policies, it has to see the conditions of the people who are right now living. तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर नाउ वी हैव टू टर्न टू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. नाउ वी कैन नॉट फाइट ओवर एन इश्यू, बट वी हैव टू रिजॉल्व इट. हम अब लड़ाई नहीं कर सकते, अब हमें जो है हर प्रॉब्लम को बैठ कर यूजिंग UN, WTO, then World Bank, we need to resolve these issues, and that is why we are reading globalization as a part of our politics. Now, it's a simple example that Janardhan works in a call center and he leaves late in the evening for the work, becomes John when he enters, acquires a new accent, speaks a different language. Why this has been written here कि he has become John and he is speaking? Because in the call centers normally we have to speak up in a special language. This is because most of the countries which are having their BPOs in India, जिनका आपका business processing outsourcing है, यानी कि what is that BPO? Actually what is BPO is, they are the companies which are owned by Indians. लेकिन हम अपने लेबर्स को, हम अपने एग्जीक्यूटिव्स को सोर्स करते हैं टू दीज कंट्रीज जिनके कॉल सेंटर्स हमारे पास हैं. इंडिया में लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा है, एंड सेकेंडली वी आर ऑल्सो हैविंग अ गुड परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये जो दोनों प्रॉब्लम्स है, दिस इज सॉल्व थ्रू BPOs. उनके कॉल सेंटर्स हमारे यहाँ होते, तो वी नीड टू कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज. who are living thousands of miles. He works all night, यानी कि उसका नाइट शिफ्ट है, and which is actually daytime for his overseas customers because of the time lag. He is rendering service to somebody who in all probability he is never likely to meet physically, क्योंकि वो तो यहाँ काम कर रहा है. This his holidays also do not correspond to the Indian calendar, but maybe from the clients from US. No, but अभी थोड़े टाइम में the countries have made some changes. Like my daughter also has more or less, उसका भी जो कैलेंडर है वो correspond करता है US को, लेकिन they get the holidays for Indians as well. रामधारी, ये एक एग्जाम्पल था, that is of call center. Ramdhari has gone shopping to buy a birthday gift for his 9-year-old daughter. He has promised to buy a small cycle and he is finding something which is affordable. Then he buys a cycle which is manufactured in China but marketed in India. कि चाइना से जो रॉ मटेरियल है वो ईजी रहता है. एंड लास्ट ईयर रामधारी ने अपनी बेटी को बारबी डॉल दिया था विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बट सोल्ड इन इंडिया, सॉरी मैन्युफैक्चर्ड इन US बट सोल्ड इन इंडिया. यानी कि दिस इज द सेकेंड वे हाउ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज. Sarika is a first generation learner who has done remarkably through her college and working hard. She now has an opportunity to take a job and begin an independent career which the women of her family never dreamt. So she decided
to go ahead because new opportunities have been made available to her generation. This very आज हम लोग जो है, if you look into the, अगर आप लोग मेरे को follow करते हो in the YouTubes also, you will find number of careers are there for all kinds of streams today. We never had this much in the earlier period. अगर आपने कॉमर्स लिया है तो यू नीड टू गो फॉर ओनली बी कॉम. बीबीए तो अभी आया है 20-25 years बैक. बी कॉम वॉज अ वन. बीबीए जब मेरे पास हम लोगों को आया था ना तो हमारे पेरेंट्स ने बिल्कुल नहीं अलाउ किया था क्योंकि तब न्यू था. एंड देन आपका जो है यू यूज टू हैव बीएससी, बट बीएससी उस वक्त में शुरू में 4 years का होता था. देन इट वॉज रिड्यूस टू 3 years. Now you have ample courses, you take any one stream. हम लोगों को क्यों मना किया जाता था कि आप ह्यूमैनिटीज़ नहीं लोगे? बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ के अंदर स्कोप नहीं होता था. मोस्ट ऑफ द टीचर स्टूडेंट्स जिनके लेस परसेंटेज होते थे वो ह्यूमैनिटीज़ में आ जाते थे एंड यू वी यूज टू हैव ओनली BA. बट टुडे इट्स नॉट लाइक दैट. टुडे यू हैव स्ट्रीम्स, you have number of options in India and abroad. That is why it has been written that she has new opportunities. अब आज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं. तो ये क्यों है? वाई दिस अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं थे और अब आ गए? ऑल 3 एग्जाम्पल्स illustrate an aspect each of what we call globalization. जनार्दन सर्विसेज में था, रामधारी कमोडिटीज़ में थे, एंड सारिका जो थी शी वॉज हैविंग द अपॉर्चुनिटी. वाई दिस? नाउ ये जो अब हम पढ़ेंगे ये है आपका नेगेटिव इम्पैक्ट, यू कैन से. नाउ इफ वी लुक इनटू द एग्जांपल्स ऑफ यूज ऑफ टर्म ग्लोबलाइजेशन इन रियल, सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर क्रॉप्स फेल्ड. They had bought very expensive seeds supplied by an MNC. An Indian company bought a major rival company based in Europe despite protests from some of the current owners. Many retail shopkeepers fear they would lose their livelihood if some international company opened retail chains in the country. In the initial period, there were many shopkeepers or you can say many establishment जिनको इस तरीके के लॉस को देखना पड़ा. लाइक जब मैकडी आया था ना तो हमारा इंडियन फूड तकरीबन आपका बंद हो गया था. बट नाउ ऑल द इंडियन आउटलेट्स हैव आल्सो इम्प्रूव देयर सर्विसेज. A film producer in Mumbai was accused of lifting the story made in Hollywood. This was actually a very famous director. A militant group issued a statement threatening college girls who wear western clothes. यानी कि ये आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं. पहले हमने पढ़ा दे वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट, दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट. कि अगर MNCs आती हैं वो सस्ते दामों में हमें सामान देती हैं तो हम वो चीज़ नहीं खरीदते हैं जो कि हमारे पास है. इट इज़ वेरी ईजी टू कॉपी राइट. आज आप क्या करते हो? वेरी फ्रैंकली मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, फटाफट आप लोग जाते हो गूगल से, फिर आप कट एंड पेस्ट करते हो और मुझे फटाफट दे देते हो. वो अलग बात है कि आई एम रियली वेरी स्मार्ट. मुझे सबका पता होता है कि कौन कहाँ से उतार रहा है. This is because I spend 18 hours of my time on computer. Sometimes I have to, do some things. Sometimes. So मुझे पता होता है. But it's easy. It's easy. आज हमारे पास में कितने songs हैं जो कि अगर आप उनके ट्यून्स को देखोगे ना, I don't know कौन सी मूवी थी, सलमान की मूवी थी, I don't know. बट उसके पीछे एक मतलब कि देयर वाज वन केस, अभी रिसेंट मूवी थी कि जो उसके अंदर जो ट्यून्स, उसके अंदर जो फाइट सीन्स वगैरह थे, दे ऑल वर कॉपीड फ्रॉम सम हॉलीवुड. आई डोंट रिमेंबर, मैंने वो मूवी देखी भी है बट था वो मतलब उसके अंदर वो जो भी पिट भी गई थी वो मूवी. रौनिक कौन सी मूवी थी जो सलमान की मूवी पिटी थी? एक ट्यूबलाइट थी, फिर एक अंतिम थी और उसके बीच में एक मूवी आई थी जिसके बड़े सारे सीन्स कट गए थे. कोई भी बॉयज़ को कुछ नहीं पता होता है. पता नहीं कैसे बच्चे हैं ये लोग. बी स्मार्ट, बी इन वर्ल्ड.
सुमित, डू यू नो? अंतिम से पहले थी बेटा वो, मुझे याद नहीं है. एनीवन, एनी गर्ल? अंतिम से पहले थी वो, मुझे याद नहीं है. प्रभुदेवा था शायद उसमें. हाँ, राधे. यस, दिशिता, थैंक यू. तो ये जो मतलब ये जो कॉपिंग होता है, दिस हैज बिकम इजी. एडिटिंग करना, किसी की शक्ल को किसी के अंदर डालना, एडिटिंग करना, या फिर आपके जो कॉपी राइट्स हैं, इवन दो वी आर हैविंग वन पेटेंट, हमारे पास एक मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, लेकिन फिर भी एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल. कोई भी मूवी रिलीज होती है तो दैट इज अवेलेबल ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म. मतलब वो अलग है, नेटफ्लिक्स वगैरह अलग है, लेकिन आपको फ्री में भी पहले ही मिल जाती है. Why this is? This is because the information services are now passing freely. 47 से पहले you might have not heard about any militant or what you call as terrorist attack. कभी नहीं आपने सुना होगा. If you see the terrorist attack, uh, most of them were after 75s. So this is also an example. So means we have the positive as well as negative. There are many who believe it has more negative than positive. क्योंकि कई बार क्या होता है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, it is also affecting our day-to-day lives. Since much of the usage tends to be imprecise, हमें नहीं पता ना, इसीलिए तो it is a concept fundamentally dealing with flows. यानी कि पैसा, commodities, लोग, everything, and this is what we call as worldwide interconnectedness that is created and sustained as a consequence of these constant flow. इनकी वजह से हम लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं. The money is flowing, people are flowing, the commodities are flowing, our ideas are flowing. ये वाला पेपर में आता है आपके बोर्ड्स में. ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट. ये वाला पूरा जो अभी पैराग्राफ है, दिस यू हैव टू एक्सप्लेन. एज यू नो व्हाट इज डायमेंशन. जैसे हम 3D बोलते हैं तो वी से लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सिमिलरली इट हैज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन. मतलब उसका जो असर है वो पॉलिटिकली भी देखा जा सकता है, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी. कुछ लोगों का मानना था कि इट इज़ प्योरली इकोनॉमिक, एंड सम पीपल से इट इज़ मोर कल्चरल, क्योंकि टुडे पीपल बिलीव वी आर ऑल बिकमिंग वेस्टर्न. हम लोग जो है वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं. बट इट इज़ अनइवन. It is not only political or cultural, political, economical, cultural, सब है. In some part it is more, in some part it is less. Like if you go to European countries, वहाँ आपको ये globalization word इतना बड़ा नहीं दिखाई देगा. The reason is they all have been within this area, within this spheres for many years. अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर जाओगे तो यू विल डायरेक्टली हैव द इम्पैक्ट, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो पॉलिटिक्स है, उसका बहुत सारा जो है देयर हैज बीन अ चेंज. सो इन सम एरियाज इट इज मोर, इन सम एरियाज इट इज लेस. नाउ व्हाट एक्चुअली ट्रिगर्ड ग्लोबलाइजेशन? ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री पढ़ो and you will find that people traveled. आपके बहुत सारे लोग थे. जब प्लेग हुआ था यूरोप में, so the people migrated to Australia and America. That is why these three nations speak English. Diseases आपके जो है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये आपके जो हैं दे ऑल एक्चुअली माइग्रेटेड. जब ये लोग शिप में जा रहे थे तो उनके साथ जो बीमारी गई थी उससे आपका मतलब कि हुआ था. सो उस वक्त में भी था. पीपल यूज टू कमोडिटीज बहुत कम जाती थी, लेकिन जाती थी. बट इन कॉन्टेम्पररी हमारा स्पीड बढ़ गया है.
पहले ऐसा नहीं था, but now the speed has increased. Why? And it is a single factor, that's technology. And that technology को हम एक में नहीं लेकर आएंगे. We divided into communication and transportation. That day I told you that in the earlier times when we used to go, मतलब किसी का अगर हमें टेलीग्राम वगैरह करना पड़ता था तो it was very scary. Then telephone, microchip, और अब we are having a revolutionized communication. Then printing आया, तो printing completely changed the specific thinkings. आज प्रिंटिंग के भी आपके अलग अलग तरीके हैं. Printing is not now confined to what we call as books, it's also digital. So the ability of ideas, commodities, capital and people now move more easily from one pot to another due to this technology. How? The movement of capital and commodities will be more likely to be quicker, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट में पहले क्या होता था, the movement used to be only ship. अब भी शिप है, बट रास्ते आपके जो SLOCs हैं, मतलब कि जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, वो आपके इम्प्रूव हुए हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की. देन इवन बाय एयर इट हैज़ इम्प्रूव्ड. Globalization, however, does not emerge merely because of availability of improved communication. What is important is for in different parts of the world to recognize these interconnections to the rest of the world. Currently, we are aware of the fact that events taking place in one part of the world could have impact on another. The bird flu, tsunami, it does not respect any national boundaries. इसका मतलब ये है कि not only the capital, not only the commodities, not only goods, but also diseases, ये भी आपके जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं. The current pandemic is the best example. Then when a major economic event takes place, that also affects, let's say policies changed by any country, specifically by the developed countries, जब policies change होती हैं तो उसका बहुत असर होता है. Now come to the three dimensions: political, then आपका economic and cultural. One of the debates मैंने आपको उस दिन बताया था कि now no country can make any policy which is only confined to their own nation. But at the same time it is not कि वो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं. There are areas. How does globalization affect the traditional concept of state sovereignty? At the most simple level, globalization results in an erosion of state capacity. मतलब कुछ लोगों का मानना है कि it has decreased. सबसे पहला सबका कहना है that it has decreased the ability. The old welfare state मतलब working for the welfare of their own country, is now giving way to a minimalist state that performs certain core functions such as maintenance of law and order and security. मतलब यही दो functions उनके ज़्यादा हैं for all the government. बाकी it withdraws from many of its earlier welfare. पहले ये तो था economic social well-being, government का काम था. But now
It is the market that becomes a prime determinant of social and economic priorities. The entry and increased role of MNCs have led to the reduction of capacity. Yes, this is very true. As I said, no country can now make any policy which is purely only for their country. They have to make it sure कि जो countries हमारे यहाँ जो companies आ रही हैं उनका असर हम पर कैसे हो रहा है. एक्चुअली हम पहले इकोनॉमिक डायरेक्टली करते थे. द कंट्री ओन द, जैसे इंडिया है, रशिया है, इन्होंने अपने जो है दे हैड केप्ट द व्हाट वी कॉल एज इंडस्ट्रीज इन देयर हैंड्स, बट नाउ वी हैव लेफ्ट. सो इकोनॉमिकली और सोशली जो है आपका जो मनी सर्कुलेट हो रहा है वो बाहर से हो रहा है. एट द सेम टाइम द ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस. The primacy of the state continues to be unchallenged because of the political community. The old jealousies and rivalries have not ceased to matter in world. The state continues law, order, national security, but जहाँ उनको importance लगती है वो रहते हैं. At the same time, जहाँ नहीं है they have withdrawn. Indeed, in some respects, state received a boost. उस दिन आपको मैंने बताया था कि टेक्नोलॉजी में जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड है, दैट्स अ वन गुड यू कैन से वे. पैन कार्ड, आजकल लाइसेंसिंग, देन आपका पासपोर्ट, वी आर यू नो दीज थिंग्स जहाँ पर द स्टेट हैज़ टू कीप अ चेक, वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव. Indeed, in some respects, state capacities has received a boost. With enhanced technology at the disposal, it is able to collect information about its citizens. With this information, the state is better to rule, not less able. Thus, states become more powerful when they are using technology. Economic. While everything may not be known as economic facts or facets of globalization, this particular dimension shapes a larger part. ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड शुरू हुआ था ना, दैट वाज एक्चुअली इन द स्फीयर ऑफ इकोनॉमी. एनी कंट्री विच ईज्ड आउट इट्स पॉलिसीज वाज बेसिकली फॉर इकोनॉमी. आप सोशल रशिया को ले लो, आप इंडिया को ले लो, किसी भी कंट्री ने अगर उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया था तो दैट वाज फॉर द इकोनॉमिकल बेनिफिट. वो अलग बात है कि इकोनॉमिकल बेनिफिट जब आता है, एमएनसीज आए तो एमएनसीज के साथ आपका जो है तरीका बदल गया. जब तरीका बदलता है तो हमारा खाना पीना, हमारा रहना. सी लेट मी टेल यू वन थिंग. एक बहुत सिंपल सी चीज़ है. देर आर मेनी ग्लोबल स्कूल्स, देर आर मेनी इंटरनेशनल स्कूल्स, means those who are having the curriculum with IBS international school से है, then आपका ICSE है. तो like हमारे जो contemporary schools हैं वहाँ पर we were told that we need to wear only साड़ी. We were not supposed to wear any kind of what we call as suit वगैरह हम नहीं पहन सकते थे, बिल्कुल भी नहीं. But जो आपके ग्लोबल स्कूल्स हैं, इफ़ यू लुक देयर यू विल हार्डली फाइंड एनी टीचर विद साड़ी. वहाँ कंपल्शन है दैट यू हैव टू वियर द वेस्टर्न आउटफिट्स. दिस इज मतलब एक तरफ अगर हम देखते हैं कि दे आर गिविंग अस सम बेनिफिट, बट दे ऑल्सो वांट कि हम उनके अकॉर्डिंग चलें. तो डेफिनेटली दैट विल हैव इफेक्ट ऑन आवर सोशल एंड कल्चर. A part of the problem has to do with defining economic globalization itself. The mention of economic globalization draws immediately to the role of institutions like IMF and WTO. IMF, which has been established to support the developing countries. WTO, the one which is a platform for the trade across the globe, and the role they play in determining economic policies. Yet, it should not be viewed in such narrow terms. Many actors other than these international institutions have their role. A much broader way of understanding of economic globalization requires to look at the distribution of economic gains. मतलब किसको कितना मिला है.
What is often called economic globalization involves greater economic flows. Some of them are voluntary and some of them are forced by international institutions. जैसे हमारे यहाँ पर हुआ था, वो एक force था. It was not. It was not actually our हमारी इच्छा नहीं थी. But that was only because India was at that period in debt and World Bank forced to open up our economy. As we saw in the example that this flow of exchange can take various forms: commodities, capital, people and idea. It has involved greater trade in commodities across the globe. The restrictions imposed by different countries on allowing the imports of other countries have been reduced. That is liberalization. Similarly, the restrictions on movement of capital. As I said, now it is easy for an Indian company to raise capital in any other country using GDR, Global Deposit Receipt. Any foreign multinational company can raise capital in India using IDR. पहले ये allowed नहीं था. In operational terms, the investors in rich country can invest their money in countries other than their own. They can have their मतलब कि there are ways. Globalization has also allowed the flow of ideas. The spread of internet and computer related services जितने भी हैं, today it is not restricted. आपको अपना कोई भी काम करवाना हो, these ideas can flow across the globe. You can sell your product, you can buy your product. But it has not led to the same degree of increase in the movement of people. वो मैंने आपको वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस बताए थे. इट्स नॉट लाइक कि सभी ने वीज़ा ओपन कर रखा है, बट येस, developed countries have carefully guarded their borders with visa policies to ensure citizens of other countries cannot take the jobs of their own citizens. Specifically, it is there in the European era. US ने तो बहुत ज़्यादा ईज आउट किया है. कनाडा ने तो खैर उनका तो एक तरफ से यू कैन से देयर पॉलिसी, बट देर आर स्ट्रिक्टर पॉलिसीज. यू कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड आज आपका मन किया चलो यार अब हम 12th ख़त्म कर चुके हैं, अब यूएस में जाके सेटल हो जाते हैं, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, मेरा यूएस का टिकट करवा दो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. देर आर हंड्रेड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. यू डोंट गेट अ पीआर डायरेक्टली. You have to go through your companies. You can't even go for, even if you're going for the education also, they have so many restrictions. In fact, in Canada also, what they do is they will be asking you a statement of purpose in which they would मतलब कि they want that you should mention that you are going to come back to India. So normally they don't allow. In thinking about the consequences of globalization, it is necessary to keep in mind that same set of policies do not lead the same results. It has led to similar economic policies adopted by government in different parts in the world. This has generated vastly different outcomes. It is again crucial to pay attention to specific context, then make special simple generalization in this connection. Economic globalization has created an intense division of opinion. कुछ का मानना, मैंने आपको बताया व्हेन इकोनॉमिक हुआ उसी का असर आपका सोशल और कल्चरल पे हुआ. तो कुछ लोगों का मानना है that it has positive effect. Some says those who are concerned about social justice are worried about the extent of state withdrawal caused by process of economic globalization. As I said, many of the countries have eased out their policies. Like हमारे यहाँ पर भी the Indian Wage Act, the Salary Act में जो है काफ़ी ease out है. पहले होता था स्ट्रिक्ट होते थे, बट नाउ बिकॉज MNCs हैं, वी कैन नॉट आस्क देम टू फॉलो आवर पॉलिसीज बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री. तो हम उनको सारी शर्तें नहीं बोल सकते हैं. तो उन जो लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं उनका मानना है कि बिकॉज ऑफ दिस द सोशल जस्टिस जो है, मतलब सोशली एक कंपनी जो है इट इज़ गिविंग ऑल द बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉयज़ बट अनदर कंपनी इज़ नॉट गिविंग. They point out that it is likely to benefit only a small section of the population, while
impoverishing those who were dependent on the government for jobs and welfare. एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, अगर आप आज की डेट पर देखो, द सैनिटेशन अगर आप देखो, द नंबर ऑफ private colleges, the number of private health, the number of private players have increased. आप देखो कभी, if you look into the government figures, see the number of colleges you are having and the number of people who are appearing, and this is giving the benefit for those who are in the private. I can very well correlate it with medical. Even DU के अंदर भी we have around 50,000 seats, and the number of students who appear every year is around 2.5 lakhs. Just imagine where those 2 lakh people go. उनमें से 50,000 चलो, they have got the seats. 50,000 have gone for, they don't continue their education. But what about the rest? They go to the private. यानी कि private को ज़्यादा फायदा मिल रहा है. They have emphasized the need to ensure institutional safeguards or creating social safety nets to minimize the negative effects of globalization on those who are economically weak. ये पेपर में क्वेश्चन आया था, what is social safety net? This is because those people who are not able to, where they will go? It is the government who has to see कि सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है. there should be there should be some safety for those who are economically weak. Many movements all over the world feel safety nets are insufficient or unworkable. They have called for a halt to forced economic globalization, for its results would lead to economic ruin for weaker countries, especially the poor within these countries. This I can very well correlate, because I'm in the education field, so I know daily I receive a number of students who are, those who want to go for DU, but definitely एक सेट ऑफ आपके पास है. देन व्हेन दे रीच, अभी एक स्टूडेंट का मैं करवा रही थी, मतलब कि पेरेंट्स का कॉल आया था, आपके ही संभव का था. तो हिज पेरेंट्स वर टेलिंग कि मैम, अब वी ऑल्सो नो कि ही इज़ अ मीडियोकर चाइल्ड. तो कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट देन इट कॉस्ट यू lakhs of rupees. So that is where the difference comes. Advocates, मतलब ये positive factors हैं for economic globalization. It generates greater economic growth and well-being for larger sections of population when there is deregulation. Greater trade among countries allow economy to do what it does best. मतलब पहले तो there were more restrictions on movement of goods, movement of commodities, services. But अब वो easy होने की वजह से many supporters say that it provides a challenge that can respond to intelligently without accepting it uncritically. What, however, cannot be denied is its increased momentum towards interdependence, integration between government, business, and ordinary people in different parts of the world. That's there. You are sitting at your place, you are giving an online exam. But how it has come? It has come due to technology. Today you are able to, these things ये correlate हो रहा है. यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये चीज़ हमारे पास आई, ये चीज़ होने की वजह से वी आर एबल टू. सो मेनी ऑफ द पीपल हु आर इन द पॉजिटिव सेंस जैसे कि देयर इज एन ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑल्सो, एंड इट हैज़ रियली इम्प्रूव द स्टैंडर्ड. द लास्ट जो पेपर में पूरा अलग से आता है, द कल्चरल कॉन्सिक्वेंस. एक टाइम हमारा था व्हेन वी यूज्ड टू हैव अ यूनिफॉर्म कल्चर. Within India also we had heterogenization, लेकिन अपने अपने कल्चर को कोई मतलब कि नहीं छोड़ना चाहता था. As I told you that day, the example of masala dosa, and we have a kind of dosa, paneer dosa, and I really, मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्यों हमारे authentic dosa का मतलब कि नुकसान करते हो. But that is what we call as cultural heterogenization. The consequence is not defined only to the spheres of politics and economy. It also affects us in our home, what we eat, drink, wear, or even think.
आज I can bet upon that there would be no one who would say that ma'am we don't have a Prime account or we don't have a Netflix. कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा. And that is how we are shaping our thoughts. It shapes what we think are preferences. It has led to the fear that process pose a threat to cultures. It is because it leads to the rise of uniform culture or what we call as cultural homogenization. It's not emergence of a global culture. अब होमोजिन का मतलब होता है एक, बट ऐसा नहीं है कि अराउंड द वर्ल्ड वी आर हैविंग द सेम कल्चर. एक तरफ से हम एक यूनिफॉर्मिटी में आ गए हैं. what we have in the name of global culture is imposition of Western culture. We have already studied this in power of ये हमने नहीं पढ़ा था, but I had told you the popularity of a burger, blue jeans, some argue is the influence of American way. Does the culture of politically economically dominant society leave its imprint on less powerful society? क्योंकि अब सब लोग वैसा ही चाहते हैं कि हमें अमेरिकन जैसे रहना है. Those who make argument often draw attention to McDonaldization. ये मैकडी जो है that was an American concept and today most of the people want to eat burger and buy into the dominant American dream. This is dangerous not only for the poor countries but for the whole humanity. ये कुछ लोगों का मानना है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका कल्चरल हेरिटेज जो है वो खत्म हो रहा है. At the same time, it's not that it's only negative. Cultures are not static. All cultures accept outside influence all the time. आप अपना पढ़ो, सोशियोलॉजी में पढ़ो, यू विल फाइंड, जिन बच्चों के पास सोशियोलॉजी है दे कैन फाइंड सोसाइटी कैसे चेंज हुई थी. आप आज से इफ़ यू लुक इनटू द एरा ऑफ श्री राम, उस वक्त में सोसाइटी क्या था, आज सोसाइटी कैसा है. Some external influences are negative because they reduce our choices, but some simply enlarge. The burger is no substitute to masala dosa, therefore does not pose any real challenge. मतलब उनका कहने का मतलब है जिसको डोसा खाना होगा वो डोसा ही खाएगा. It's simply added on to our food choice. Blue jeans can go well with खादी कुर्ता. तो अगर आपको ब्लू जीन्स पहना तो आप कुर्ते के साथ पहनो. एंड बहुत सारे फॉरेन के अंदर तो दिस यू नो खादी कुर्ता इज worn ओवर जीन्स. Interestingly, this clothing combination have been exported back to the country that gave us blue jeans, so that it is possible to see young Americans wearing kurta and jeans. While cultural homogenization is an aspect, the same also generate precisely the opposite effect. It leads to each culture becoming more different and distinctive. अब हम अपने कल्चर के अंदर भी we are having differences, and this is cultural heterogenization. This is not to deny that remain differences in power when cultures interact, but instead more fundamentally to suggest that cultural exchange is rarely one way. मतलब एक तरफ से हम ये नहीं बोल सकते कल्चरल एक्सचेंज एक तरफ है. धीरे 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 हम दोनों तरफा जो है वी आर एक्सेप्टिंग. लाइक इंडिया के अंदर अगर हमने जीन्स को एक्सेप्ट किया है तो एट द सेम टाइम कुर्ता हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द फॉरेनर्स, दे आर आल्सो वियरिंग. तो नाउ यू कैन नॉट से दैट इट इज अ डोमिनेंस, इट इज हेट्रोजेनाइजेशन. हमारा हम उनका अगर हमारे पास आया तो हमारा उनके पास गया है. नाउ हाउ इंडिया, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ दैट इंडिया के अंदर मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कोमोडिटीज, पीपल, इवन अगर हम लोग अपने बीएसटी में जब हिस्ट्री ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं ना तो वी हैव रेड इट इन द मौर्य टाइम्स. तो इट हैज़ बीन देयर. तब भी पोर्ट्स होते थे, विशाखापट्टनम था आपका, मछलीपट्टनम था आपका. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियल एम्बिशन, इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड रॉ मटीरियल्स. क्योंकि रॉ मटेरियल से फ़ायदा क्या होता है, सस्ते में जाता है तो हमारे पास रेवेन्यू कम आएगी, और वहाँ से इंपोर्ट होकर जब सामान यहाँ आता तो वो महंगा बेचा जाता था. आफ्टर
independence, we decided to make things ourselves rather than relying on others. Till 1970, the Indian Export Company was not allowed free exports. This protectionism, मतलब this was to protect the producers कि वो लोग अपना बनाएं. अगर सब कुछ बाहर से आएगा तो वो बेचारे कब बनाएंगे? While some advances were made in certain areas such as health, housing, primary education did not receive the attention they deserved. As I said, आप आज भी देख लो, education is not there. But yes, later on, with अब आज के में क्या है, private education is also quite reasonable. Health, not there. But housing, yes, it has improved. In 1991, responding to financial crisis and to the desire of higher rate of economic growth, इंडिया ने अपना LPG सिस्टम रखा था. While it may be too early to say how good it has been, the ultimate test is not high growth, that the benefits of growth are shared so that everyone is better. As to some extent, we have definitely done it. We have already noted globalization is a very contentious subject and has invited strong criticism. हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है. Critics of globalization make a variety of arguments. Those on the left argue contemporary globalization represents global capitalism that makes rich richer and poor poorer. मतलब उनका मानना है कि जो difference between the rich and poor है वो ज़्यादा हो गया है. This is because it is a kind of imperialism. Weakening of the state, यानी कि state का जो power है थोड़ा कम हो गया है, leads to reduction of capacity of state to protect the interest of its poor. Yes, I can agree this to much extent. I can agree this. Many of the companies do not follow the rules of India. वो मतलब कि छूट जाते हैं. एंड उससे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर लेबर पावर होता है, जो कि मतलब कि उसमें क्रेटा में आते हैं, दे आर critics of globalization from the political right express anxiety over the political, economical, cultural. In political terms, they also fear weakening of the state. उनको लगता है कभी ऐसा ना हो कि economically they want a return to self-reliance and protectionism, at least in certain areas. अभी हम लोग completely we are dependent on others. Culturally, they are worried that traditional culture would be harmed and people will lose their age-old values and ways. यहाँ पर, as a teacher, I would say कि it's okay. It is up to a person that वो अपनी value को कितना रखना चाहता है. If I want to root to my culture, nobody can take out. I have my family who is living in US, but till date you won't believe उनके घर में प्याज तक नहीं डलता. तो ऐसा नहीं है कि culturally it will be done. It depends more on the people. It is important to note here anti-globalization movements to participate in global networks, aligning with those who feel them in other countries. मतलब जैसे हमारी कंट्री में वैसे दूसरी कंट्री में भी जिनको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन राइट नहीं है, तो उन लोगों ने एक अपना मूवमेंट बना रखा है. They are not opposed to the idea of globalization per se as much as they are opposed to specific program of globalization. मतलब वो ये नहीं बोलते हैं कि द मूवमेंट शुड नॉट बी देयर, बट एक स्पेसिफिक एरियाज में जहां उन्हें लगता है कि ओवर इंटरफेरेंस है, जहां उनको लगता है उनका कल्चर खराब हो रहा है, पॉलिटिकली दे आर बीइंग सप्रेस्ड, वहां दे वांट. In 1999 at the WTO ministerial meeting there were widespread protests at Seattle. Seattle is in US, alleging unfair trading practices by economically powerful states. This was actually related to US, जिनका बहुत सारे लोगों का मानना था कि US सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को बिल्कुल भी उनके इंटरेस्ट को नहीं देखता है. It is not giving sufficient importance to the global economic system. The WSF, it is one more, which brings together wide coalition
ये मतलब कि WSF आपका जो है ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है. ह्यूमन राइट, environmentalist, labor, youth, women, those who oppose to neoliberal globalization. It was held at Brazil, and the fourth in Mumbai, and the latest in Brazil again. Now, how India has reacted. What has been India's experience? Social movements play a role in helping people make sense of the world around them and finding ways to deal with matters that trouble them. Resistance to globalization has come from different quarters. हमारे यहाँ पर भी same है. Some of the people in the MNCs, they have they say that उनको वो benefits नहीं मिलते हैं जो कि higher में मिलता है. Yes, this is very true. Like in if you are working in a government company, there are so many rules. So a person is not easily taken off. But in MNCs, it is very easy. आज है कल नहीं है. Resistance to globalization in India has come from different quarters. They have been left wing, those who voice through political parties as well as through forums like Indian Social Forum. Trade unions of industrial workforce as well as those representing farmer, they have protested. The patenting of plants like neem has also generated considerable opposition. मतलब ये वो लोग हैं जिनका मानना है politically and मतलब कि economically we are suppressed. कुछ लोगों का मानना है जो those who go for the right, उनका मानना on the cultural influence, like the availability of foreign TV channels. एक टाइम था जब आपका जो एक वो फैशन टीवी आता था, इट वाज उसके ऊपर केस चला था. The channels provided by cable network, celebrations of Valentine's Day, westernization of dress, taste of girl students in schools and colleges. In fact, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि many of the schools, many of the colleges, in fact colleges जो हैं, they मतलब कि they had in fact changed the dress codes. मतलब पहले तो हमारे यहाँ होता था कॉलेज का मतलब है wow we are going to wear whatever we want to. But then there were number of incidents and people resisted, and now there are many professional colleges jahan par you are still you have to wear dress. In fact IP में भी मेरे students पढ़ते थे, उनका भी तब dress code था, and even they used to have the house system. So this is what we call as globalization. With this, the chapter is completely concluded, right?